हे गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में अभी जीरो हीरो के ऊपर जीरो हीरो ट्रेड लेंगे। तो वेट करते हैं जीरो हीरो ट्रेड होने का, तब तो अपना चार्ट सेटअप कर लेते हैं। जैसे कि मैंने ये ट्रेड लाइन सेटअप की है। ट्रेड लाइन को आप देख सकते हो, इसकी मार्केट इस फॉर्मेशन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से देखिए लोअर टू हाई का एक फॉर्मेशन बना है। तो अभी अपने सपोर्ट के आसपास में अभी बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 42,650 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वही बात करें निफ्टी की, तो लगभग 18,050 के आसपास अभी निफ्टी भी है। तो देखते हैं मार्केट जीरो हीरो ट्रेड लेने के लिए अभी हमें वेट करना है कि अगर मार्केट या तो इस रेंज के नीचे निकल जाए या इस रेंज के ऊपर चले जाए। हम बेसिकली जो जीरो हीरो ट्रेड लेंगे वो लेंगे लगभग 1:45 बजे। तब तक वेट करेंगे मार्केट का, क्योंकि वहां तक अपने को प्रीमियम वो थोड़ा डिके भी हो जाएगा। उसके बाद जीरो हीरो में जो मूवमेंट होगा 1:45 बाद मिलेंगे, लगभग 2:45 बाद मिलेंगे। तो 2:45 लगभग 3:15 45 मिनट तक अपन ट्रेड करेंगे। तो देखते हैं जीरो हीरो ट्रेड का क्या फॉर्मेशन बनता है। अभी मार्केट अभी अपनी जस्ट अपने सपोर्ट के आसपास है। तो क्योंकि 42,600 के आसपास सपोर्ट है, तो सपोर्ट के आसपास देखते हैं मार्केट दिखता है कि यहाँ से ऊपर जाता है। बेसिकली अपनी ट्रेड होगी 2:45 में लगभग 2:45 लगभग 45 मिनट तक अपन ट्रेड करेंगे। अभी मार्केट अभी कुछ नहीं करना, बाकी वेट करना मार्केट का। अभी निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में भी अभी जस्ट ऐसे ही अपने को मूवमेंट देखने मिला, लगभग 18,050 के आसपास में सपोर्ट है। तो सपोर्ट के नीचे आ गया निफ्टी भी। तो जहाँ से देखते हैं कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा तो अपन ट्रेड लेंगे। बाकी का अपन जब ट्रेड बनेगा लगभग यहाँ से अपन ट्रेड लेंगे, लगभग 2 बजे बाद में ट्रेड लेंगे।
देखने को मिल रहा था वो देखने को मिल चुका है। अभी मैं अपने प्रॉफिट की बात करूँ तो लगभग 2,500 का प्रॉफिट मेरे को मिल चुका है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि अपने को ब्रेकआउट मिलेगा तो डेफिनेटली अपने को 300 पॉइंट तक का मिल सकता है। तो लगभग 600 से सीधा 300 तक का टारगेट अपने मूवमेंट कैप्चर किया है। तो डेफिनेटली अपने को जो टारगेट था अच्छा खासा टारगेट मिल गया। अगर आपने पुट में पोजीशन बनाई होती तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया होता, क्योंकि एक बार हमने जो बाइंग साइड में पुट पोजीशन बनाई थी तो वो वहाँ पे अपने को पोजीशन में लॉस हो गया था लगभग 20 पॉइंट का। बट अगेन अपने दूसरी पोजीशन बनाई है उसमें लगभग 100 पॉइंट का अगेन अपने प्रॉफिट हुआ है। तो लगभग अपने को ऑन एन एवरेज एक लॉट पे अपने 2,000 प्रॉफिट हुआ है। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।